Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In the last class, students, I have discussed with you partnership retirement. And in partnership retirement, we have discussed in the last online class that in partnership retirement, we have six uh, cases or six methods to solve partnership retirement. Now, for the current class, I would like to discuss with you the remaining three cases of the retirement. That is your revaluation. And this revaluation, you will get the gain and loss, and then you will have goodwill and then bonus. So, hope so. It is much clear to you when we will start our chapter. Now, we have revaluation method. Revaluation means it is your recalculation and re-estimation of your assets and liabilities, which we usually calculate for the retiring partner. When a partner is retiring from the firm, so we usually calculate its assets and liabilities while he was retiring from the firm. Then we have another method is goodwill. Goodwill nature is intangible current asset. Then we have bonus, which is given by the partners of the firm. I proceed further. We have to remember the points. Then gain on revaluation always debited, and loss on revaluation always credited. We have to revise the few steps of the revaluation. करंटली अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने रीवैल्यूएशन का क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास 5 steps आते हैं. द स्टेप नंबर 1 इज योर जनरल जर्नल ऑफ एडजस्टमेंट्स, मींस ऑल द एडजस्टमेंट्स you have to do in your journal. And then in step number 2 you have to prepare the revaluation of your ledger. Then in step number 3 we have gain and loss on revaluation. Then in step number 4, we have general journal of distribution gain and loss. And in step number 5, we have general journal of retiring partner. So I proceed towards the questions. This is your main journal entry for the gain on revaluation. All the partners, when we get the gain, so when we have the gain, the capitals will be credited. Gain will create your capitals at the credited side. Gain होने से आपका capital increase होता है, इसलिए आप उसको credited side पे लिखते हैं. And then revaluation will be debited. Loss will create your capital decrease. So decrease of capital will be recorded on the debited side. Okay, then we have journal entry for the retiring partner. The journal entry for the retiring partner is the reverse entry, that is the reverse entry of partnership formation. Capital debit, cash credit. I will give you the comparison. Comparison is, wait for a while. Yes. Comparison of formation and retirement. Like partner when enter the firm, the journal entry we usually record cash debit, capital credit, and at the time of retirement we will record the journal entry as capital debit and cash credit. Now come towards your book practice questions of partnership revaluation. Retirement of partnership revaluation. Yes, in partnership retirement, we have the method for the retirement, that is the revaluation. As the you will get or understand the word something is already valued, किसी चीज़ की को आप estimate कर चुके हैं, उसकी value लगा चुके हैं, and after you can say getting the value, you again revalued because the person is leaving or retiring from the firm. Now the question is, Mr. A, B, and C were partners sharing profit and losses in the ratio 1:1. If this ratio is giving you that they are equal partners, the balance sheet of the firm stood as under. We have debited side, and in the debited side we have cash, account receivable, merchandise inventory, closing, land and building. In the credited side, we have accounts payable and the capital of A, capital of B, and capital of C. So this is your asset side, which is your debited side, and this is your credited side, which is your equities side. The partnership revaluation have the 5 steps. What are those 5 steps? These are the 5 steps. First of all, you have to record the general journal of adjustments. Now,
You can see in the question that you have the journals over here for these adjustments. These are your transactions for your adjustments. Clear? Now what I will do, C is retiring from the firm. C is the retired person who is retiring from the firm. So I have to highlight the capital for C also. Clear? Okay. Oh no, it's not working. Yes, C's capital is 250 and C is retiring from the firm. Then we have adjustments, and the adjustments are allowance for bad debts to be maintained 10% on account receivable. The account receivable value is 150. You have to show the separate working of working number one in your board examination, and you have to show the working like account receivables equals to 150 multiplied by 10 divided by 100, and then you will get the value of allowance for bad debts, which is your 10%. अलाउंस फॉर बैड डेट्स बेटा हमेशा कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट है जो कि ऑलवेज क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है. ठीक है. रीवैल्यूएशन का जब भी हम चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें हम जब एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं तो कोई न्यू अकाउंट क्रिएट नहीं करते. उस अकाउंट को कहते हैं रीवैल्यूएशन, जो कि इन एडजस्टमेंट्स को एडजस्ट करेगा. We use an account or name of the account which is for adjustments. वो account जो कि adjustments को record करता है हम उसको नाम देते हैं revaluation का account. ठीक है. Allowance for bad debts आपके पास credit side पे record होंगे. You can see in the journal it is on the creditor side. अब जब एक कोई चीज़ credit में है इसका मतलब कुछ debit में भी record होगा. So your debit will be your revaluation account, as I told you. कि जब भी आपको एडजस्टमेंट्स बनानी होती है, एडजस्टमेंट्स को रिकॉर्ड करना होता है, तो आप एक नया अकाउंट मेंटेन करते हैं. वो रिटायरिंग पार्टनर का होता है और जिसको हम कहते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक है. और इस रीवैल्यूएशन को बनाने का मकसद क्या है? टू इवैल्यूएट द गेन एंड लॉस ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर. कि जो रिटायरिंग पार्टनर है वो फर्म से जाते वक्त गेन प्रोड्यूस कर रहा है या लॉस प्रोड्यूस कर रहा है. Then we have second transaction, land and building to be increased by 20%. आपकी लैंड और बिल्डिंग कितनी इंक्रीज हुई है? 20% इंक्रीज हुई है. इट मीन्स योर एसेट विल बी इंक्रीजिंग ओवर हेयर. आपका एसेट कितना इंक्रीज हो रहा है? लैंड एंड बिल्डिंग 20% से इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है. इंक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स जब इंक्रीज होता है इट विल बी डेबिटेड. हमने इसका रूल पढ़ा है ना, AELCR. Assets and expense when increasing they are debited. Liability, capital and revenue when increases they are credited. So when assets are increasing, land and building are increasing, they are debited. ठीक है. जब लैंड एंड बिल्डिंग बेटे यहाँ पे आपके पास डेबिट में रिकॉर्ड हो गया, डेफिनेटली जो दूसरा अकाउंट हम जनरेट करेंगे वो होगा आपके पास रीवैल्यूएशन का अकाउंट. नाउ लैंड एंड बिल्डिंग की जो अमाउंट आपको दी हुई है वो 835,000 दी हुई है. उसमें आपने 20% कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100 एंड यू विल गेट द अमाउंट दैट इज योर 167,000. it is shown over here, but you have to show again the working for land and building in your examination. This will be your working number 2. Okay, the working number 2 you have to write it down. Land and building is 835,000, and then you have to apply 20% on it, multiply by 20 divided by 100, and then you will get the value for the increase of land and building. Clear? Now last entry, that will be your merchandise inventory be reduced by 40,000. It means the nature of merchandise inventory is, the nature of merchandise inventory is again your asset, and when your asset is decreasing it will be credited. So merchandise inventory will be recorded in your creditor side. Another account which will generate after adjustments, this will be a revaluation account. यहाँ पे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की वैल्यू आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी गिवन वैल्यू है तो डायरेक्ट आप 40,000 से रिकॉर्डिंग कर देंगे. क्लियर? अल्हम्दुलिल्लाह जी बेटे. Sorry. Yes, after recording all the adjustment, our next step is
journal of adjustment, then we have to prepare the revaluation of ledger. हमें revaluation इसका एक टी अकाउंट बनाना है. टी अकाउंट बनाने के लिए इसका सिंपल प्रोसेस है हमारे पास कि आपने ये देखना है कि आपकी रिवैल्यूएशन की टी अकाउंट बना रहे हैं. सबसे पहले आपने देखना है कि ए पार्ट में आपका रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है या क्रेडिट. ए में आपका रिवैल्यूएशन डेबिट है 15,000 से. आपने लिखा ए द रिवैल्यूएशन विल बी डेबिटेड 15,000. क्लियर? अच्छा, अब सेकंड में आपने देखना है कि आपका मिस्टर बी में रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है, तो आपने बी लिखा और रिवैल्यूएशन क्रेडिट लिख दिया. यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जब उन्होंने यहाँ पे ए के आगे अलाउंस फॉर बैड डेट्स लिखा है, तो ये आपका वो अकाउंट होता है जिसकी वजह से आपका रिवैल्यूएशन जो है वो डेबिट हुआ. ठीक है, ये वो वाला अकाउंट है कि व्हाट विल बी द रीजन. क्लियर? एक मिनट, it's not working over here, I don't know why it's not working. Okay, anyhow, this account which I would like to highlight this allowance for bad debts. सबसे पहले हमने देखा कि A पार्ट में रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है 15,000 से, हमने 15,000 लिख दिया और उसके डेबिट होने का जो रीजन है वो अलाउंस फॉर बैड डेट्स है. क्लियर? देन सेकंड पार्ट में हमने रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया बिकॉज रिवैल्यूएशन इन क्रेडिटेड. ठीक है, हमने इसको क्रेडिट साइड पे लिखा और उसके क्रेडिट पे आने की वजह क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग. ठीक है. Then in the third part, we have done the journal revaluation will be on the debited side. I write it down on the debited side of the revaluation. ठीक है. Wait. I will write on the debited side of the revaluation. This will be a 40,000. ठीक है. And this 40,000 will occur due to your merchandise inventory. Clear? Then we have D part. Now, after recording all the transactions, what you have to do, आपने अपने debited side का total निकालना है. यहाँ पे 15,000 and then 40,000. Your total is 55,000 and here your total is 167,000. Definitely आपके पास जो डेफिशिएंसी ऑफ मनी आ रही है वो डेबिट साइड पे आ रही है. जब भी आपके पास बैलेंस सीडी डेबिट साइड पे आएगा तो वो आपका कहलाता है गेन ऑन रिवैल्यूएशन. यहाँ इन्होंने इसको पार्टनर्स कैपिटल लिखा हुआ है, आप लोग इसको बैलेंस सीडी और गेन ऑन रिवैल्यूएशन लिख सकते हैं. अपने डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करिएगा ताकि बैलेंस सीडी के अमाउंट आ जाए. दैट विल बी योर 11,2,000 1,000 सॉरी 1,12,000 आपकी बैलेंस सीडी की अमाउंट है. दैट विल बी योर गेन ऑन रिवैल्यूएशन. गर्ल्स, आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि जो क्वेश्चन मैं आपके साथ क्लास में डिस्कस कर रही हूँ काइंडली आप लोग उसको साइड बाय साइड मेरे साथ अटेम्प्ट भी करते रहें. ठीक है. अच्छा, गेन ऑन रिवैल्यूएशन जिस तरह के अभी आपने टॉपिक में गो थ्रू किया हमारे साथ कि गेन ऑन रिवैल्यूएशन हमारे पास जाता है हमेशा डेबिटेड साइड पे. ठीक है. सो हमारे पास डेबिट साइड पे आया गेन ऑन रिवैल्यूएशन 1,12,000. अब ये गेन है इसलिए ये सारे जितने भी करंट पार्टनर्स हैं उनमें ये डिस्ट्रीब्यूट होगा. क्लियर? नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी एज पर देयर रेशियो बिकॉज दे आर equal partner. They are equal partner, 1:1:1, and their ratio is the sum of ratio is 3. So 112 multiplied by 1 and divided by 3, this will be your working number 3, and you have to show their distribution separately. Clear? Then after recording of the revaluation, what you have to do, you have to make the last entry which will be your journal entry for the retirement. Okay. Now the journal entry for the retirement is the person who is retiring from the firm. The entry will be your capital debit and your cash will be credited. Clear? सो योर कैपिटल विल बी डेबिटेड. जो उसका सी का अपना कैपिटल है 250 जो आपने हाईलाइट किया था वो, प्लस जो गेन हमारे पास मिस्टर सी इस वक्त लेके जा रहे हैं 37,334 वो भी हम इसको देंगे. इट मीन्स द कैपिटल एंड द गेन विल बी द टोटल कैपिटल ऑफ मिस्टर सी रिटायरिंग पार्टनर. कैश अवेलेबल कैश ऑफ द फर्म, जो फर्म में इस वक्त कैश मौजूद है वो कैश अपने साथ लेके जा रहे हैं which is your 30,000. Wait for a while, please, girls.
Um, yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello. Yes, ma'am. Yes, I'm asking this yellow marker you are using. Yes, ma'am. So why don't you use? Okay, fine. I will discuss this thing later on. You continue your lecture. Okay, thank you, ma'am. Wait for a while, please, students. पास कि रिटायरिंग पार्टनर जो फर्म का कैपिटल है वो अपना कैपिटल लेके जाएगा, डेफिनेटली उसका कैपिटल हमारे पास डेबिट होगा। एंड देन उसके वो तमाम चीज़ें जो उसको अवेलेबल कैश मौजूद है, जो कि क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है कि अवेलेबल कैश एंड द अमाउंट्स ऑफ नोट पेएबल, दैट विल बी अमाउंट ऑफ नोट पेएबल जो आपको कैलकुलेट करना है, वो बेटा आपके पास होगी बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पे आप मेंशन कीजिएगा बैलेंसिंग फिगर का वर्ड, ठीक है। मीन्स 287,334 माइनस योर 30,000 and then you will get the value of 257,334. Clear? Then we have the balance sheet. ठीक है, the balance sheet is not necessary for the board perspective because ये आपके syllabus में included नहीं है. Then we have another question that will be your goodwill. I will make it 100%. No, 75 it's okay. Okay. We have this question that will be the question for your goodwill. Y, M, and C were partners of a firm sharing the ratio 2:3:1. ठीक है, आपने इस रेशियो को यूज करना है 3:2:1 respectively. The last balance sheet stood as under. We have the balance sheet on the asset side. We have cash, accounts receivable, merchandise inventory, and equipment. Then we have creditor side accounts payable Y, M, and C capital. Again, I have a request for you people that what you have to do whenever you get the question in the examination, आपने अपने question को properly go through करना है, properly read करना है, ठीक है? From the first line till the end. Now, what I have to do, it is agreed that M is retiring from the firm. Retirement partner is Mr. M, whose capital is 210. आपने highlight कर लेना बेटे. Now give entries in the journal to record the retirement of Mr. M and prepare the balance sheet after his retirement separate cases. Again we have two cases, case A and case B, ठीक है। And one point you must remember कि goodwill जो भी आपको दी जाती है, goodwill बेटे हमेशा whenever we record the goodwill, goodwill हमेशा आपको firm provide करती है, और जो bonus होता है वो आपको existing partners अपने capitals में से देते हैं। Clear? Now M is paid from the firm resources 235,000. M को फर्म अपने रिसोर्सेज में कितने पैसे दे रही है? 235,000। और उसका कैपिटल कितना है बेटा? 210। नाउ टू कैलकुलेट द गुडविल, आपको कैपिटल में से जितने वो पैसे फर्म रिसोर्सेज से लेके जा रहा है उसको आपस में लेस करना होता है कि कितनी अमाउंट हम उसको एक्सेसिव दे रहे हैं, हम उसको लेस दे रहे हैं, ठीक है। Now the working which is shown, the capital of Mr. M is 210, okay, and then the firm resources उसको amount मिल रही है 235,000. Now how you will get the value? You will get the value 210 less 235, and the amount you will have is 25,000. Is this clear? Now because 210 less 235 you will get the value 25,000. This is the excessive amount. अब हमारे पास जो पार्टनर है उसका अपना कैपिटल तो 210 है, लेकिन फर्म से जाते वक्त वो लेके जा रहा है 235,000. इट मीन्स उसको 25,000 ज्यादा मिल रहे हैं, ज्यादा लेके जा रहा है. दैट विल बी द गुडविल टू मिस्टर एम. नाउ टू कैलकुलेट द टोटल गुडविल, अगर मुझे टोटल गुडविल निकालनी है तो मैं क्या करूंगी? मैं रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन अप्लाई करूंगी और मिस्टर एम का. कैसे? हमारे पास m का रेशो क्या है? y, m and c. The ratio of Mr. M is 2. Clear? And the sum of ratio of these three partner, 3 plus 2 plus 1 is 6. It means the sum of ratio is 6. Clear? So हमारे पास fraction क्या बना है? 2 upon 6. Clear? 2 upon 6 is the fraction of Mr. M.
M का अपना रेशो है 2, clear, and then the sum of ratio is 6, that will be a 2 upon 6. Now the excessive amount paid to M is 25,000, जो कि आपने यहाँ पे calculate करी थी, that will be a 25,000. Then you will apply the reciprocal. 2 upon 6 का reciprocal क्या होगा बेटे? 6 upon 2. उसको आपने पलट के लिख देना, and that will be called your reciprocal. ठीक है, 25,000 multiplied by 6 divided by 2, and then we will get the amount that will be your 75,000. Clear? Now we have to divide this 75,000 to the partners. Goodwill is 75,000 because we have to divide the total goodwill to all the partners. 75,000 is the total goodwill, and then you will apply the ratio of each partner on the value of goodwill. 75,000, then multiply by 3. 3 is the ratio of, wait, yeah, 3 is the ratio of Mr. Y, 2 is the ratio of Mr. M, and 1 is the ratio of Mr. C. Okay, so उनके जो भी respective ratio है, Mr. Y ratio is 3 multiply 75,000 multiplied 3 divided by 6. 6 is the sum of ratio, 3 is the ratio of Mr. Y. Then M is the total amount multiplied by the ratio of Mr. M, and then sum of ratio. Then Mr. C, the 75,000 into the C ratio and the sum of ratio. This is the amount of the total goodwill. Now Mr. M कितनी goodwill लेके जा रहे हैं? 25,000. Clear? और उसका अपना capital कितना है बेटा? 210. 210 plus 25,000, it's your 235,000. Clear? Yes. Now the journal entry for the retiring partner of Mr. M is 210 plus 25,000. The value is 235, and that is your cash. Retiring partner की journal entry हमारे पास क्या होती है? Capital debit and cash credit, which I have discussed with you in the start of my lecture, that we have the journal entry for the retiring partner is capital debit cash credit, which is the reverse journal entry of partnership formation. Clear? Then we have another part B of the goodwill. What we have discussed in the part B of the goodwill, here we have the part B. M is paid from the firm resources 150,000 cash and equipment is 90,000. So M जब firm से जा रहा है तो उसको firm का cash दे रहे हैं 150,000 और equipment की cost कितनी है बेटा? 90,000. ठीक है, so 90 plus 150, how much amount? 240. Okay, now the journal entry for the retiring partner, M का अपना capital कितना है बेटा? 210, और वो firm से जा रहा है 240 लेके, means 150,000 cash plus 90,000 is the equipment. The total value is 240. Again your goodwill is 30,000, क्योंकि आप 240 में से 210 को less करेंगे, the answer of goodwill is 30,000. Then we have okay, distribution. Now what you have to do, 30,000 पे भी आप reciprocal apply करेंगे, that is your multiply by 6 divided by 2, and 90,000 is your total goodwill. Clear? Again एक दफा discuss करती हूँ. Interest of M is 2. This is your interest of M is 2. The sum of ratio is 6. This is the interest for Mr. M. To calculate the total goodwill, we will apply the reciprocal of the interest of Mr. M. That is 6 divided by 2, 90,000. क्लियर बेटे? जब आपके पास टोटल गुडविल की वैल्यू आ जाएगी, इस पे आप इंडिविजुअल पार्टनर का रेशो अप्लाई कीजिएगा, और इंडिविजुअल पार्टनर का रेशो आपने क्या कैलकुलेट किया है? मिस्टर वाई का रेशो है 3. ठीक है, ओवर हियर 3 upon 6, the ratio of Mr. Y, then sum of ratio, then Mr. Y capital, the amount of total goodwill multiplied by the ratio of Mr. M and the sum of ratio, then the capital of C, the total goodwill and the ratio of Mr. C, and then sum of ratios. You will get the value. Who is the retiring partner? Mr. M is the retiring partner, and he is having the goodwill 30,000. क्लियर? उसका अपना कैपिटल कितना था बेटे? 210 उसका कैपिटल था. देन गुडविल उसको कितनी मिली है? 30,000. द टोटल कैपिटल विच ही इज टेकिंग फ्रॉम द फर्म इज 240,000. क्लियर? Now the 240,000 is this amount. Clear?
Now we have the cash and equipment values. Cash उसके पास 150 है, and then equipment we have 90,000. Clear? Hope so. It is very much easy and easily understandable by you all. Now I proceed towards the next question which is related to bonus. But before this, अगर मैं आपको एक दफ़ा बैलेंस शीट थोड़ा सा गो थ्रू कर दूं, सेम बैलेंस शीट वही होगी बेटे जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। जो आपका रिटायरिंग पार्टनर है आपने उसको डेफिनेटली फर्म में से या बैलेंस शीट में नहीं रखना। प्लस जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनको जो अमाउंट ऑफ गुडविल मिलेगी वो आप इनके प्रीवियस कैपिटल्स में ऐड करके यहाँ पे लिख दीजिएगा। दैट्स इट। एंड देन अमाउंट ऑफ कैश विल बी योर बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि जब आपके कैपिटल्स का जो टोटल होगा, इक्विटी साइड्स का जो टोटल होगा, उसमें से आप रिमेनिंग एसेट्स को माइनस करेंगे एंड देन यू विल गेट द अमाउंट ऑफ कैश। क्योंकि कैश की वैल्यू आपको ऑलरेडी फर्म में जो कि गिवन है, देख लीजिए यहाँ पे कैश 290 है, जिसमें से हमारे पास केस बी में, ठीक है, कितना कैश जा रहा है 150, तो रिमेनिंग अमाउंट इज 140। इस तरह आपने करना है कि 290 में से 150 माइनस होगा, यू विल गेट द वैल्यू इज 240। क्लियर? Then I will proceed towards the next question. This is your question of bonus method. Wait for a while. I'm giving you the little bit time for your participation sections also. Yes, this is your question for the bonus method. Now, what I have to do for the bonus method, we have again X, Y, and Z partners. Their sharing ratio is 2 is to 3 is to 1. I will make it enlarged for you people. Now it is clear. The last balance sheet is stood as under. We have the balance sheet debitors side is your asset, creditors side is your equities. It is agreed that Y is the retiring partner. We have to underline the capital of Mr. Y. Then we have the two cases A and B. Y is paid from the firm resources 235. Y का अपना कैपिटल है 210 और वो लेके जा रहा है 235,000। ठीक है, हमने कैपिटल में से जो फर्म रिसोर्सेज हैं उसको माइनस करना है एंड द वैल्यू ऑफ बोनस इज 25,000। हम इसको बोनस क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगी कि आपने उसको बोनस से करना है या गुडविल से। जिस तरह इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसको आप गुडविल से नहीं कर सकते, गुडविल ऑफ द फॉर्म इज नॉट रिकॉर्डेड डेफिनेटली, तो फिर आपने इसको बोनस से करना है। बोनस की जनरल एंट्री में हमारे पास जो मेन कॉन्सेप्ट है, बोनस हमेशा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स देते हैं रिटायरिंग पार्टनर को। रिटायरिंग पार्टनर वाई है, एग्जिस्टिंग पार्टनर एक्स एंड जेड हैं। तो डेफिनेटली जब एक्स एंड जेड अपने कैपिटल में से कुछ पैसे मिस्टर जेड को, मिस्टर वाई को देंगे तो उनका कैपिटल डेबिट होगा। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई। एक्स और वाई अपने कैपिटल्स में से मिस्टर वाई को बोनस देंगे। नाउ 25,000 टोटल बोनस है जो मिस्टर वाई अपने साथ लेके जा रहे हैं। अब एक्स कितनी अमाउंट दे रहा है और वाई सॉरी जेड कितनी अमाउंट दे रहा है, हमने इस पे लगाने हैं इसके रेशोज। 25,000 इज द अमाउंट ऑफ बोनस। हमारे पास एक्स का रेशो क्या है 3 एंड देन जेड का रेशो है बेटे 1। ठीक है, सो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 3 देन डिवाइड बाय 4। 4 इसलिए कह रहे हैं कि हमने एक्स और वाई सॉरी एक्स और जेड के रेशोज लेने हैं। एक्स का रेशो 3 एंड जेड का रेशो 1। द सम ऑफ देयर रेशोज इज 4। 3 + 1 is 4। दैट्स वाई हम यहाँ पे 4 लिख रहे हैं। और आपने यहाँ भी करेक्शन कर लीजिए, ये 1 डिवाइडेड बाय 3 नहीं है, 1 डिवाइडेड बाय 4 है। यहाँ पे प्लीज मेक इट करेक्ट, इट इज 1/4। सो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 1 divided by 4, here you need to correct, it should be 4 and then answer is 6250। The journal entry for the retiring partner is existing partners will be debited and retiring partner will be credited। ये अपने पास नोट डाउन कर लें क्योंकि बोनस मेथड आपको existing partner देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द जर्नल एंट्री फॉर द रिटायरिंग पार्टनर। कैपिटल हमारे पास का कैपिटल था 210। 210 अपना कैपिटल भी लेके जाएगा प्लस बोनस भी लेके जा रहा है। टोटल अमाउंट 235 है और कैश क्रेडिट। क्लियर? नाउ वी हैव बोनस मेथड केस बी। Yes, wait for a while. Mm-mm-mm. Yes, here.
The bonus method case B, the Y capital is 210 and he is taking how much amount? Case B जरा आपके साथ एक दफा पढ़ तो लूं. Y is paid from the firm resources 90,000 cash, 90,000 cash लेके जा रहा है और equipment की cost भी 90,000 है. So cash 90,000, equipment 90,000, your total amount is 180. ठीक है बेटे. नाउ उसका अपना कैपिटल कितना है? 210. फर्म से लेके जा रहा है 180. 210 में से 180 को आप लेस करेंगे. द अमाउंट ऑफ बोनस इज 30,000. 30,000 अगेन वही पार्टनर देंगे जो फर्म में ऑलरेडी मौजूद हैं, जो कि आपके पास कौन कौन से हैं? मिस्टर एक्स और जेड. यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे आपके पास मिस्टर वाई फर्म से लेके ज्यादा जा रहा है, जबकि उसको पेड कर रहे हैं हम 180. इट मीन्स बोनस आपको न्यू पार्टनर को नहीं मिलेगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर को मिलेगा. ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो पार्टनर इस वक्त रिटायर हो रहा है उसका कैपिटल है 210 और जो हम उसको अमाउंट दे रहे हैं वो 180 है, उसके कैपिटल से कम अमाउंट उसको पे कर रहे हैं. इट मीन्स जब हमारे पास रिटायरिंग पार्टनर के पास खुद पैसे ज्यादा हैं तो वो दूसरों को दे के जाएगा. बोनस टू एक्स एंड जेड. अब मिस्टर वाई एक्स और जेड को कितने पैसे देगा? 30,000 में से इनका रेशियो अप्लाई कीजिएगा. 30,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 एंड देन 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4. अगेन मैं आपको ये पॉइंट रिवाइज करा दूं कि कैपिटल जो कि रिटायरिंग पार्टनर है उसका कैपिटल 210 है और जो फर्म से जा रहा है जाते वक्त उसको 180 दे के भेज रहे हैं, यानी उसके उस कैपिटल से पैसे कम दे रहे हैं जो कि वो फर्म में लेके आया था. इसका मतलब वो दूसरों को दे के जा रहा है, इसलिए अपने पास से कम लेके जा रहा है. वो किसको दे के जा रहा है? एग्जिस्टिंग पार्टनर को, जो कि एक्स और जेड हैं. और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को पैसे दिए 30,000. देन उसकी कैलकुलेशन एज पर द रेशियोज आपने कैलकुलेट किया. द लास्ट जर्नल एंट्री मिस्टर वाई 210 माइनस 30,000. यहाँ पे देखिए माइनस करेंगे, 210 में से 30,000 माइनस होगा क्योंकि वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को पैसे दे के जा रहा है. इज 180. कैश आपके पास 90,000 है एंड इक्विपमेंट इज 90,000. This is all for today. In the today's class, I have discussed with you the revaluation method of the partnership retirement, the goodwill method of the partnership retirement, and the bonus method. Further, if you have any queries you can ask me, and you can send your questions or queries on my WhatsApp or email address. In the next lecture, in the next classes, I will discuss with you the past papers questions of the partnership retirement. Thank you so much. Allah Hafiz. Yes, girls, thank you so much.